Episode 6 of the Fuck Ups, we have Aditya Ghosh. कैसे बोलना पता है? आदित्य घोष. हम लिटरली लाइक इतने एरिया में जितना पॉडकास्ट हो रहा है ना एरिया में बस फ्रा करते थे. दिसंबर एजेंसी ग्राफ as this and this. I need to get back on track with my goals first, and I have like my whole life to get behind the girls. So guys, welcome to the 6th episode of the Fuck Ups, and in this episode we have Aditya Ghosh as our guest. Fill in the blank चल रहा भाई. मत करना भाई, मैं खत्म कर दे करके. Okay. हो गया, यही हो गया. सब जान गए. कौन है? रुक और एक बार. नहीं ठीक है ये घोष, आदित्य घोष, और ये दिल्ली से है. ही हैज़ अ यूट्यूब विद 5K सब्सक्राइबर्स, और इसने पूरा वो चैलेंज करा था. काफ़ी लोग जानते भी हैं, हमारे पॉडकास्ट पे कमेंट्स आए थे, स्क्रीनशॉट डाल देना कि नेक्स्ट एपिसोड विद आदित्य घोष. तो उसी दिन लिटरली मैसेजेस पे दिखा सकता हूँ मेरे कि इसने बोला कि भाई मैं नहीं हूँ, आप लोग हो. और फिर ये तुरंत आ गया. इम्पल्सिव प्लान 2 घंटे में बना. ये उसने उसी दिन की फ़्लाइट बुक करी और ये उसी दिन आ गया. तो आज हमारे साथ है ये. और इस एपिसोड में वील बी टॉकिंग अबाउट एजेंसी स्टफ, बिजनेस स्टफ, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज वांट टू नो हाउ ही बिल्ड हिज एजेंसी टू 25K MRR. दिसंबर में हिट हुई थी हाईएस्ट 25K, and then averaging $20,000. एवरेजिंग 20. भाई अप एंड डाउन होता है, नॉर्मल बंदा नहीं है. तो वी हैव उससे भी बेसिक, नॉर्मल से भी बेसिक. हाँ, कर लूँ करना बोल. तो this episode also, just like Saksham's ones, will be heavily agency focused. We'll talk about his outreach system, इसका ऑफर क्या है, and everything. इसके दिमाग में जाएंगे और देखेंगे कि इसने एजेंसी बिल्ड कैसे करी. So Subah, And also his life story, a little bit into how he got here, why choose the agency, and he actually dropped out in the second year. Is that right? yeah. In the beginning of the second year. So what made him drop out? He went through 1 year of college, which I could never imagine going through myself. He managed to do that, and then he called it quits. And to give you more context, before this we had met in Delhi, all of us here. When was that? Which month? I think September. To give you some context, we've met before. That was in Delhi in September of 2023, right? 2022. It's been a while. Yeah. And at that time I asked Ghosh, I'm going to be referring to him as Ghosh because we have 2 Adityas in the room. So he's Ghosh today. And I met him, we all met him together, and he was telling me, I was asking him, why are you still in college? I mean, you're earning money, your life is good, why go through this? And because I had dropped out already, so yeah. So that was my one milestone, because then I used to, like I was doing around 2K to 3K, sometimes even like 5K, and my milestone was to touch at least $10,000 per month, and then I will quit. But उसके बाद मैं पूरा करा, and then in December I hit like my agency graph was like this and then this. So December में I quit my agency. Oh sorry, my college. My college. एजेंसी गुड कर दी भाई ने. एपिसोड खत्म. And then just to, before we get into like the structured plan real quickly, what caused that big steep boom in December? So that was when I started email marketing. हाँ, with your suggestion. उसका तो like पूरा भेजा, I think like 50,000 emails, and then we closed like around 8 to 9 clients. And then What was your offer? Just to go quickly into so of the basic details before we. So simply let me explain like what my agency is all about. So it's pretty similar to like Subah as well. So it's basically catering podcast businesses and basically podcasters. And I'm providing short form content, basically cutting down long form content into pieces, and basically taking the engaging parts and like redistribution to social media platforms. And do you only service podcasts? Yeah, only podcasts, and currently switching to entrepreneurs and business owners and coaches and consultants. Fair enough. Again, side tangent, but why are you diversifying? Basically, it's a lot of people are getting into podcasters. And basically. Okay, so cool. We'll do a street cred roundup. So I want you to go over your life story and tell people why you're credible enough to be on the podcast in the first place, because किसी की भी बात थोड़ी ना सुनेंगे. तो
Like I want you to like start से start कर. You have a really inspiring story. I thought I have an inspiring one, but like जब मैंने सुना you were born there, you lived there, like that's kind of crazy. So give us like your entire life story in 60 seconds if possible, and like yeah, just street cred. ठीक है. सो बेसिकली मेरा पूरा लाइक स्टार्टिंग हुआ था लाइक कोलकाता से. सो इट्स प्रीटी सिमिलर टू अमन एज वेल. बट लाइक स्टार्टिंग में हम पूरा लाइक फैमिली रहते थे बहुत लाइक छोटे से गांव में, मिट्टी का पूरा. देन वहाँ से माई मॉम टुक मी एंड माई एल्डर सिस्टर टू दिल्ली फॉर स्टडीज़. एंड यहाँ पे आके लाइक पूरा लाइक पढ़ा. सो हम लिटरली लाइक इतने एरिया में जितना पॉडकास्ट हो रहा है ना, इतने एरिया में बस हम रहा करते थे. लिटरली लाइक सिंगल बेड. एंड देन मम्मी हमारे लाइक छोटे से लाइक उधर एक गैस था एंड वहाँ पे लाइक खाना बनाना. एंड देन वहाँ से लिटरली लाइक 2,000 रुपये पर मंथ अर्निंग था. एंड उसी में मेरी मम्मी को पूरा घर चलाना था. सो वहाँ से हमने धीरे धीरे शिफ्ट किया. एंड देन हम 1 BHK में शिफ्ट हुए. थोड़ा सा लाइक अर्निंग जब बढ़ा. एंड देन वहाँ से बेसिकली मैंने एक थीम पेज स्टार्ट किया क्योंकि मैं पूरा गेमिंग में था. ठीक है. गेमिंग में एक मेरे पास एक छोटा HP का लैपटॉप था. तो उसमें मैं लाइक स्कूल से आया डायरेक्ट बैग फेंका एंड देन बस गेम्स पूरे दिन. देन एक दिन ऐसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था तो वहाँ पे एक बिज़नेस थीम पेज ऐसे दिखा. ठीक है. एक बंदा रन कर रहा था. सो मैंने भी सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस थीम पेज, है ना, क्योंकि बहुत सारे बंदे थीम पेज बना रहे थे मीम वाले. सो बट वो ग्रो भी कर रहे थे बट वो ये लाइक मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा था. सो आई डिसाइडेड टू लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस. बट स्टिल मेरे तब इतने दिमाग में नहीं था कि इससे मैं पैसे इनकम कर सकता हूँ. मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था फॉर फन. सो स्टार्ट किया एंड देन आई यूज्ड टू मेक कंटेंट ऑन अ स्मॉल फोन सैमसंग कोर 2. लैपटॉप पे यू नहीं? लैपटॉप तब था नहीं. 2000 कमा रहे थे. अच्छा. हाँ. उसके बाद लैपटॉप आया. लैपटॉप था लेकिन उस पर लाइक कुछ नहीं चलता था. तो गेम कैसे चलता? गेम्स लाइक नॉर्मल गेम्स, मतलब लाइक जो छोटे लाइक इतने पिक्सल्स वाले गेम नहीं होते, नॉर्मल वाले, वो वाले गेम्स चलता था. सो उसी में लाइक टाइम पास करता था मैं. अच्छा. हाँ. तो उसमें लाइक कुछ नहीं होगा, है ना. सो देन आई स्टार्टेड मेकिंग. कैनवा तो चल सकता था, क्रोम तो चलता ही होगा. कैनवा तब मेरा नॉलेज नहीं था ना. अच्छा. सो लाइक वो मोबाइल में ही बनाता था. एंड देन वहीं से लाइक कंटेंट अपलोड करा. और बस मैं इतना भी हाई नहीं, बस मैं वाटरमार्क में चुरा के दूसरे का वाटरमार्क चेंज करके मैं अपने में अपलोड करता था. सो उसमें ये भी था कि एक ने मैसेज भी कर दिया था एक बार कि ऐसे तुम मेरा कंटेंट क्यों अपलोड कर रहे हो. सो देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन कंटेंट. एंड देन एक बंदा सामने से रीच आउट करता है कि कैन यू मेक दिस टाइप ऑफ कंटेंट फॉर माई थीम पेज एज वेल. सो तब थोड़ा सा लाइक ऑनलाइन वर्ल्ड का दरवाज़ा लाइक खुला, गेट्स, कि हाँ कुछ थोड़ा इनकम भी कर सकता हूँ मैं इस चीज़ से, है ना, थीम पेजेस से. सो देन आई स्टार्टेड मेकिंग लाइक कंटेंट फॉर हिम. लिटरली ही पेड मी 800 रुपीज़ फॉर 90 pieces ऑफ कंटेंट फॉर अ मंथ. एंड तब भी लाइक मैं बहुत खुश था. लाइक मैं जाके मम्मी को दिखाता था कि मम्मी देखो इतना लाइक पेमेंट आया है ना. सो तब वो भी लाइक बहुत हाई था मेरे लिए, राइट. सो उसके लिए लाइक तब मेरे लाइक दिमाग तो खुला, थोड़ा एक्सपेंड हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ. देन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट माई ओन टू लाइक दिस काइंड ऑफ थीम पेजेस ओनर्स कि आप क्यों अपने लिए बना रहे हो, मैं आपके लिए लाइक कंटेंट बनाता हूँ, आप अपने लाइक बिजनेस पे फोकस कर सकते हो. सो फ्रॉम देन थीम पेज पे लाइक थोड़ा ग्रो हुआ, 20,000 फॉलोअर्स, 30,000. तो उससे थोड़ा सा लाइक प्रमोशन करता था. सो आई वॉज अर्निंग अराउंड बिटवीन 40K to 50K. एंड देन वी लाइक वही मान गाजी एंड वहाँ से लाइक स्टार्ट हुआ एजेंसी. एंड देन हाँ, देन आई लेफ्ट Iman Gadzi and started my own agency. Fair enough. It's very crazy that each one of us, even Saksham in the last episode, all did theme pages. It stands out way too much. And if someone was to ask me today, should I start a theme page to start off? No. My answer might not even be start a theme. Obviously not. You can't grow them anymore. Like you can literally grow the page recently. Mostly. So now Instagram का थोड़ा सैचुरेट हो चुका है, but now is like on top like TikTok theme pages. वो बहुत ग्रो कर रहा है. So अभी अगर किसी को स्टार्ट करना है तो they can start like TikTok theme pages rather than Instagram theme pages. And to viewers and listeners, we don't have TikTok in India. That's what we think. But there's a way to get it, and I would highly suggest exploring it because TikTok is lucrative, and you shouldn't just miss out on it because India banned it. So that's that. But Aditya, first of all,
after your theme page, so do you still have them, or did you end up selling most of them? Yeah, so currently I leverage that theme page. It has around more than 2 lakh followers on Instagram. So I currently leverage that to like client, like maneuver client to my like agency. And then get some leads and Yeah, get some leads and yeah, basically market my agency. How do you get the leads, like from the page? What system have you set up? So like post like random like top quality like shots of famous personalities and just like put in like bio, so like managed by like my agency. So basically like people will know, yeah, this reel is edited from this management or like agency. And also we put in the captions, so if you want this type of reels and if you want to grow your brand, just contact or email like @ We can put his page up, and anyone that's interested, you can go check it out so you understand exactly how he gets leads. So like, you don't have any information gap when it comes to getting clients. Like, he's getting clients, he's literally telling you how to get some. So like, you can just reverse engineer that and get some clients for yourself. Definitely. Tell us more about your upbringing. Like, how was it hard? Because like you told me कि मिट्टी के घर पे रहते थे और यहीं पे चूल्हा था. वो कोलकाता का था हाँ ये वाला, क्योंकि वो लाइक टाइल है वैसा टाइप्स. भाई, वो क्रेजी है पता है, क्योंकि मैं रहता था ऊपर और नीचे हमारे वैसे घर रहते थे और तुम वहीं पे रहते थे, पता नहीं था मिल लेते हम. you know what is actually crazy is that oftentimes it is the people from like those places who Yeah, nothing. from nothing that have that drive to do something. But at least most of the people that I've grown up with, it's a different story. I grew up like in a different type of environment and situation where more of luxury type. Yeah. So या सो बेसिकली जो डिफ़िकल्टीज थी कि टेक्नोलॉजीज़ मेरे पास लाइक थोड़ा माइंडसेट था कि कुछ ना कुछ तो करना है, बट मेरे पे वे नहीं था कि क्या करूं बेसिकली. सो जब मैंने स्टार्ट किया था, सो पूरा लाइक माइंडसेट था कुछ ना कुछ करना है, एंड जो भी मेरे पे रिसोर्सेज थे उसका फुल लाइक यूटिलाइजेशन किया था. सो जो मेरे पास जो फ़ोन बताया, लिटरली उसमें लाइक 500 MB रैम था भाई. वो सैमसंग का है ना. एंड एक ऐप खुलने में भी लाइक बहुत टाइम लगता था, बट स्टिल उसमें मैं अराउंड आज जो पोस्ट कैनवा में जो बन जाता है अराउंड 5 मिनट में, तब मैं लगता था उसमें 2 घंटे लगता था, क्योंकि छोटा सा. हाँ, मेरे को याद है. तो और उसी से मैं पोस्ट भी करता था, है ना. तो ये डिफ़िकल्टी थी कि माइंडसेट था बट वही रिसोर्सेज नहीं थे, है ना. और आपके पास वो फ़ोन पड़ा है? फ़ोन भी है. वो फ़ोन का फ़ोटो मतलब अभी हम लोग इस पे फ्लैश करेंगे. आई हैड अ सिमिलर फ़ोन. It was like 6,000 rupees, so like not even $100, and that's how I made my first like money. And मैं भी वही भाई कैनवा पे उस पर एडिट करना, कंप्यूटर नहीं था तो कैनवा पे एडिट करना और फिर उस पर डालना. मैंने फैशन पेजेस बनाए थे स्टार्टिंग में, तो मैंने डिज़ाइन भी सीखी थी भाई, लिटरली सेम. लेकिन आपकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि आप मेरे से भी नीचे से आए हो. आपके पास आपका जो फ़ोन था वो 512 MB रैम. हाँ, मेरे 2 या लिटरली 2 GB स्पेस था बस. भाई, that's hard. वही. My biggest struggle, even close to this, is editing on CapCut mobile on an iPhone, so I can't relate here. CapCut mobile. और क्या था कि रह के कैसा लगता था उस घर में? तो तब वो मेरे लिए भी ठीक था, क्योंकि मेरी मम्मी भी लाइक पूरी मेहनत करती थी. सो मैंने ना ये भी एक चीज़ भी है कि मैंने आज तक अपनी मम्मी से कुछ पैसे नहीं मांगे. जैसे स्कूल में लाइक मांगते हैं ना बच्चे की, सेम भाई, मैंने थोड़ा नहीं मांगे. 10 रुपये दे दो, कुछ खाना है. क्योंकि मुझे पता है मम्मी काम कर रही हैं 9 to 5 डेली, लाइक 10 बजे जा रही हैं, रात को 7 बजे आ रही है, एंड मुझे स्कूल जाना है ध्यान से. तो मुझे पता है कि लाइक पैसे लूँगा तो कितना वो कट होगा. सो मेरे दिमाग में था कि मैं इतना लाइक ले नहीं सकता, वही लाइक कितना कम हो जाएगा, है ना, सब्जियां भी खानी है तो वो सब. सो मैं पैसे नहीं मांगता. सो जैसे लाइक मैं फर्स्ट स्टार्टेड माई लाइक अर्निंग, तो तब मेरा थोड़ी सी लाइक अपग्रेड हुआ. आई सेव्ड अराउंड 20,000 रुपीज़. तब मैंने एक सेकेंड हैंड iPhone 7 खरीदा था. वो हाँ, सेकेंड हैंड. सो उस पर मैं थोड़ा सा लाइक बोला था कि अब थोड़ा सा कंटेंट लाइक अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है. थोड़े मैं एक क्लाइंट था मेरा तब, वो मुझे अराउंड 10,000 रुपये देता था
पर मंथ। एवरेज भी नहीं, वो लाइक रेगुलरली भी नहीं था, कभी लाइक ऑर्डर आया तो दे दिया। सो थोड़ा अपग्रेड वहाँ से अपग्रेड हुआ 7+, देन मैंने खरीदा था XR एंड XR टू नाउ 13। सो तो ये था। एंड जो तुम पूछ रहे हो कि कैसा एक्सपीरियंस था, वो भी तब भी मेरे लिए अच्छा था, क्योंकि क्योंकि वो दिमागी नहीं था कि इससे भी मैं अच्छा लिव कर सकता हूँ। समझे, उतना दिमाग का एक्सपेंडेशन नहीं हुआ था तब। कैन यू फील? या डेफिनेटली। है ना, मैं दिल्ली में था बट मेरे आसपास भी नॉर्मली लोग रहते थे। सो मेरा वो था भी नहीं कि ऐसा मैं एक फ्लैट पे भी रह सकता हूँ, कुछ भी, है ना। सो वही मेरे दिमाग का एक बाउंड्री था, एंड वो भी मेरी लाइक नॉर्मल लाइफ थी, एंड आई वाज एंजॉयिंग इट। दैट्स ब्यूटीफुल मैन। इट या काफ़ी इंस्पायरिंग है, मतलब कमिंग फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, और इतनी जल्दी। ये पता है कितने साल का है? गेस करो कितने साल का है ये? ही इज नॉट इवन 19 अभी, और ये 6'2" है। मैं जो ऑलमोस्ट 6'3". I can't believe the guys who are 6+, even they feel the need to say almost round up. भाई टावर हो रखा। Yeah, that's crazy. बट या इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो मतलब अब एजेंसी पे चलते हैं, कि मतलब एजेंसी टॉक्स। तो लाइक वॉक अस थ्रू, पहले हम लोग ऑफर पे जाएंगे, फिर मतलब नॉर्मल, फिर मार्केटिंग, फिर सेल्स। Actually, before that, I want to ask him. So, usually when you're growing up in a less fortunate environment, the parents and families are more orthodox and stricter. How did you manage to travel? ओके, सो ये थोड़ा वो हो जाएगा कि मैंने अभी, मेरे पास पापा ना देखे, पापा को अभी पता नहीं है कि आई एक्चुअली ड्रॉप्ड आउट। Close. ठीक है, आई एक्चुअली ड्रॉप्ड आउट। बस मेरे हिंट दिया है कि मैंने ड्रॉप आउट कर लिया है, बट मैं ऐसे बस अभी थोड़ा दिखाता हूँ कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा लाइक वैसे टाइप्स। बट स्टिल उन्हें लाइक थोड़ा पैसे मैं देता हूँ, जो घर में देता हूँ, वो उनसे थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। Mind that. जीनियस भाई, बताया ही ड्रॉप आउट कर लिया। Send some money to parents. बस थोड़ा लाइक माँ बाप को थोड़ा घूस देना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल क्या बोल कि देखो मेन प्रायोरिटी क्या है। एक माँ बाप अगर ऐसे साइकोलॉजी माँ की लाइक पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखे, सो दे वांट टू जस्ट सी देयर चाइल्ड सक्सीड एंड मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, सो आप उनको बताओ कि एटलीस्ट जो भी आप कोर्स कर रहे हो, सो आई वॉज डूइंग BCom। ठीक है, सो BCom के बाद एक नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, लाइक एक बैंक में मैनेजर लग जाएगा, राइट। सो उसके बाद भी एवरेज सैलरी 50K to 60K। ज़्यादा ही बोल रहे हो, एवरेज नहीं है। हाँ, लाइक स्टिल लाइक गवर्नमेंट जॉब भी हो जाए। सो प्रूव दैट टू योर पेरेंट्स बाय मेकिंग मोर देन दैट बेसिकली। एंड आप उससे कर रहे हो, एंड आप बताओगे कि हाँ आई एम लिविंग अ गुड लाइफ। सो फिर आपको प्रूफ वो लाइक कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आप, देन वो लाइक एग्जैक्टली, मतलब दैट्स प्रॉब्ली व्हाट द सेम लाइक हैपेंड विद यू एज वेल। यू हैव इनफ प्रूफ कि मतलब हाँ, डूइंग It's like in my case, it's that my parents still tell me to go to college. You know, and the reason behind that is because money I'm probably making more than I would have regardless if I went to college or not. Yeah. So it's for them it's more of a social status thing. Especially when you grow up in a better environment, like financially, everyone around you has gone to college abroad, and for them it is like, this guy went to US to study, and they have like that little unspoken ego thing in their head. Okay, yeah, I should also send my son to college because everyone else is doing. It is such a strong network effect. So that's why I don't think there's any other logic than that. No, I understand that. Yeah. दैट्स द सेम थिंग विद माई फादर एज वेल। Yeah. वो देख रहे दूसरे लड़कों की, या माई सन इज अ ग्रेजुएटेड, राइट। सो वो भी लाइक अपने सन को बोल, है ना। हाँ, my son is graduating. सो वो एक प्राइड के साथ कहना चाह रहे हैं, बट स्टिल एंड ऑफ द गोल इज मनी, राइट। सो वही सेम कोट है, अगर आप लंबोर्गिनी चला रहे हो, सो कोई नहीं पूछेगा आपकी डिग्री कौन है, कौन सी है डिग्री। सो सिंपली क्लिप दैट। अच्छा, तो अब एजेंसी के बारे में बात करते हैं। मतलब
I have some questions that I know the audience has as well. So we'll firstly go over your offer, उसके बाद marketing पे और फिर sales. ठीक है? तो आप पहले offer explain कर दो कि क्या बेचते हो basically. So it's a short form content creation agency. In short, so basically clipping podcasters long form content from YouTube and taking basically the engaging parts and redistribution on TikTok, Instagram and YouTube shorts. So that's the offer. Basically the short form content offer, short form content agency. Okay, so then with that offer, first of all, I'm sure we've all read 100 million offers. Yeah. So with that, Alex talks about de-risking the prospect and all of those things. So have you ever thought about those factors? Do you have any guarantees with your offer? Are you anything around that? Yeah. So one of my guarantees is guaranteeing 3x of the listeners in the next 84 days with the help of short form content. And how do you manage to deliver all this? Because I know some podcasts, it's very, very difficult for short form content to then translate into real. And there's a criteria. There's a criteria to enroll in this guarantee, right? So, for example, the podcaster should have at least 10,000 followers, right, on Instagram or and at least 15k to 20k listeners on, at least current listeners on Apple. But then look, that makes it tougher. If they have 15 to 20k listeners, if you have to 3x them, that means you'd have to get them to 60k. Yeah, but still they have the momentum, no? So we just do the redistribution on Instagram short form, right? And we just drive more traffic. Then in my opinion, it's very difficult for short form content to translate into actual podcast business. Even if you put towards the end of a video, even if you put a custom CTA, full screen CTA, you're like, oh, this snippet is from this podcast, something like that. Even then, it's difficult to go into real listenership. And only when there's a video in short form that reaches a million views, do I see even a little bit of a spike in listenership or in YouTube long form views. So how is it that you manage to keep up that guarantee for people who do qualify? Okay. So for this exact guarantee and the service, we make some more pages for the podcast as well. Like the Andotate did, and also Aman is doing, basically fan pages of him. So we make fan pages of the podcast. So basically, for example, XYZ podcast, na? So XYZ podcast reels. Yeah. So we make that type of basically content and pages and redistribute more content. Basically, that's the high ticket offer. Yeah. So if someone wants to enroll in this guarantee, I want the 3x listeners in the next 84 days. So we charge them more. Okay. Right. Right. So because we have the capability of making more content and basically making 6 to 5 more pages. And this is for the high ticket offer. High ticket offer. And what about the mid ticket offer? Because I know that for the high ticket offer, they obviously will charge. Yeah. And there's a criteria, and there are going to be a few plans who might fit into that. So what about the mid ticket and low ticket offer? So basically, the only is it's the guaranteed offer and normal offer, right? So in that we offer 90 shots, right? And normal growth is more followers. More followers. So I guess you just present them. This is what we've done in the past, but there's no specific guarantee. It's just here's what I'm providing. Right. Okay. Cool. Yeah, so that's the offer, basically two. Yeah. One with the guarantee and one with the normal. I want to know more about the ticket sizes. So you said small, medium and large tickets. So normal one is starting from 2,700 to 3,600, right? We basically start with the everyone. If someone is starting from lowest, start with 2,000, and if you're saying you are closing good amount of deals with $2,000 offer, then just increase slowly. For example, increase it to 2,500, right? So you will see your bandwidth, actually how much more money you can make with your same offer, right? So we started with 2,700 with our normal offer, and now we are closely doing around 3,600 with the same offer, right? And that's the normal offer with the 90 shots, right? And with the guaranteed, it can go up to 8K. Yeah, no, that's I like that. Cool. So
even I guess the first client I closed was at 2K. Yeah. And then it was another huge podcast for 2.5K. Then it was 3K. So yeah, gradually. Yeah. And you also get the confidence now. Ki matlab, oh, I've gotten him results. I've worked with him. So eventually you get validated. To say, big numbers and Yeah. on the same. Yeah. Like I don't know where I got this from, but like if the client is not gasping at the number you say, you probably like quoted them a lesser price than you should have. Sometimes I have clients who don't have any reaction. Like you say any number, they won't react even if it's high for them. Some mix of that. Maybe. I've read some stuff where if you like pre-frame them on like this is very expensive and then you quote a number, they feel like, oh, justified. Oh, it was not that expensive. But if you directly quote them something about, one way of doing this is by making your client list, if your client list is very high profile, proof your website looks very high ticket that way. And you should give them the premium feel and start. I guess branding would also. Yeah, it does. Yeah. So it also like if your branding is not on point, like it's a basic, it's like basic website and you're offering them, for example, 5K offer. So it will always like the client will be in shock, right? So depends on client to client because up to 20K a month we got with a very, very basic filter. Yeah. So I feel like branding is secondary always, but branding should always end up as It's like when you're selling like a high ticket product, the perfumes come with better packaging. They could be the same perfume, but like the premium feel around it, you get to charge more. So yeah, I understand that. Now let's talk about how you get the clients in the first place. So you mentioned you got 9 clients in December. Yeah. Is email, and you said you got them from email. So email. Is email like your main channel, or like there are other channels that you explore? Right. And how exactly, like there are steps, right? You scrape leads, you like write copy for the email. I want you to go in depth for the audience because like so they don't feel like, oh, I don't know. After this podcast, my goal is ki oh, meko pata hai, meko kya karna hai, I'm just not doing it. So go with that. From right in the beginning, I started with Instagram DMs. Subah also know it. So, but after the recent update, they allow only sending one message, right? Invitation. So Instagram DMs to khatam hi ho gaya almost, right? So now I'm basically all doing is email marketing, right? So email marketing jaise kaha. So I scrape leads. We have guys who scrape like top podcasters as well, and also you can just find like leads on Apollo Leads instantly. Also like rolled out their new updates, right? So you can find like tons of like qualified emails from there, and you can just starting reaching out to that. And for the subject lines, there are like a lot of like YouTube videos out there. For like I have also made like so many videos on email marketing, on subject lines and everything. Big pause there. The best subject I've tested a lot of these. Best subject I found is No. What I do like single words subject lines and like basically question mark is this for like, and what thing you can do like the first name of the you literally saw me twice. Some one line subject. Subject lines. That's the best. Sometimes for mass outreach, like I've tested quite a few of these, but mass outreach, no subject works. It works better than those. तो वो क्यूरिएशन हो जाएगा कि अरे ये कैसे आया. Because everyone sends those two liners. That's first name, comma, thoughts. Those ones. Quick question. Try no subject. Good one. Yeah, अच्छा है. लेकिन कैसा भूत सा Exactly. And if your emails look too perfect, some people use ChatGPT. Stop that. They even leave the quotes on somehow. Like what the fuck? That's fine. We don't want to talk to those people who leave quotes in their messages. But ChatGPT, don't use it for your emails. As good as you think the copy comes out, it sounds professional, but people can feel it. And that way, copy I think is best when it's scrappy and not too. I can back that up. Like I was working with this big email marketing company. Like they do a lot of email marketing, and like they've had spelling mistakes in the campaigns, and those campaigns kill. That just makes the campaign more human. कि मतलब किसी बंदे ने लिखा है, ऐसे कोई robot नहीं भेज रहा है. So like definitely that. Yeah, we go for it. Yeah, so that's what we are currently doing, like trying out different subject lines, and there are like so many videos out there on YouTube, and there's also like YouTube videos like what the sequences are. So basically A/B test what your subject lines works best, and basically it differs also from like
from which like niche you're targeting, right? So for the podcaster, it will like different, basically subject lines and not the subject line, but basically the copy. And if you're targeting like different niche, it will be different. So one of the biggest keys that I found when succeeding with emails is personalization. Yeah. The more personal you can get, the more chances of getting a reply. So how have you, tackled that? With the personalization, we have like built out a like system, right? So for personalization, एक podcasters के लिए एक कुछ line work करती है कि yeah, I saw your this like podcast and really like this part. So you can just fill out on your own what part did you like. So it will take a lot of time. So there's like two options. You can just hyper target, right? And there's like you can do mass. So it's your like choice, like which one works best for you, right? For like mass, you can just choose the best like one line that can like relate, everyone can relate in your niche, right? And you can just send that to like mass. Yeah, for one of my campaigns, which was the most lucrative one, or second to most lucrative, it was something just like, I'm a huge fan of your podcast. That's it. That was the personalization, and we got into what they're offering. And when you're sending hyper targeted emails, this is not the mass ones. You saw like I was sitting together, we sent like two hyper targeted like sniper emails where we really dig in. Right. Sample over there. So with that, I got this idea from Subah. We had a call today. What he told me and what we just implemented was creating a compliment GPT where we can take transcripts of the latest episode, run that through the GPT, and it will give you a 2-line compliment that then you would put into a sheet. Right, so your hyper-targeted sheet, you get a VA to put that compliment for all the podcasts, and then that would be one field that is personalization. Right. That's genius, though. So yeah, that's something that you guys can do. We haven't even implemented it yet, but you probably can. That's good. So yeah. But that's around emails and getting clients. Yeah. तो भाई अब fuck ups के बारे में बात करते हैं, the fuck ups podcast. और बताओ like how have you messed up और कैसे आपने उसको ठीक करा और एक lesson end में audience. So one of the biggest fuck up was like losing around 2 lakh rupees, more than 2 lakh rupees on like service delivery. So हुआ क्या था, I reached out to one client, ठीक है, and the whole service delivery was making his like fan pages, a lot of fan pages, like 10 pages each on like TikTok, Instagram. So you can say like around 40 theme pages and distribution of like around more than 1,000 pieces of content. So उसके लिए मैं पूरा ready था, and that was a ticket client of $4,000 per month, right? 40 pages and हाँ 1,000 content pieces. हाँ $4,000. हाँ $4,000. like तब मेरा एजेंसी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, अच्छा. like न्यू था तब मैं आई वॉज डूइंग अराउंड लाइक $1,000 पर मंथ. सो वो मैं लाइक बहुत एक्साइटेड था, एंड वो भी लाइक बहुत एक्साइटेड था स्टार्टिंग में कि लेट्स डू दिस आदित्य ना. और लाइक एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस, एंड मैंने एक पूरा इन हाउस सिस्टम बिल्ड कर दिया था. मैंने पीसीस खरीदे थे और लाइक एडिटर्स बिठाए थे, एंड एडिटर्स की लाइक सैलरी अच्छी लाइक 30K 40K पर मंथ, ठीक है. एंड देन मैंने उससे मांगा, एंड देन जो मिस्टेक ये था, फकअप था कि आई डिडंट टेक अपफ्रंट मनी, ठीक है. बस उसने $500 मुझे दिया था, राइट. एंड देन डिलीवर्ड ऑल द सर्विस. मेरा अराउंड 2 लाख रुपीज़ गया था $500 को काट के, जो भी आया था. सो 2 लाख से ज़्यादा ही गया था मेरा पूरा कॉस्टिंग में, राइट. जो पीसेस खरीदने में था, एंड एडिटर्स का पेमेंट, सब कुछ, अकाउंट मैनेजर्स के, जो उसका स्क्रिप्ट राइटर्स, क्योंकि वो उसको वीडियोज़ भी बनाने थे. सो एंड पूरा उसका यूट्यूब वीडियोज़ भी था. सो लॉन्ग फॉर्म टू शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट, क्लिप आउट करना, क्लिपर्स, राइट. सो इस पूरे में लाइक गया मेरा जो पैसा था. एंड देन एट द एंड ऑफ द मनी एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, राइट. सो जब मैंने पैसे मांगा, एंड सर्विस डिलीवरी पूरा एकदम अच्छा था, ठीक है. ग्रोथ अच्छी आई, लाइक वी डिड अराउंड लाइक मोर देन लाइक 5 मिलियन व्यूज़ इन अ मंथ, लाइक फर्स्ट मंथ था. एंड स्टिल लाइक वो कैसा उसके, हाँ वापस, सो वो कैसा उसका एक एक्सपेक्टेशंस कहाँ था कि फर्स्ट मंथ में हम 50 मिलियन व्यूज़ कर लेंगे. सो वो थोड़ा सा लाइक वो हो गया, एक्सपेक्टेशन से नीचे था. बट स्टिल आई थिंक लाइक 5 मिलियन व्यूज़, एंड उसका लाइक कोई ब्रांड फेस वैल्यू भी नहीं था. सो आई थिंक इन माई माइंड 5 मिलियन व्यूज़ भी लाइक इनफ था फॉर अ लाइक रैंडम डूड ऑन इंस्टाग्राम, राइट. एंड हाँ, लाइक वो पूरा गया, एंड देन उसने लाइक कुछ भी पे नहीं किया.
like So, remaining like all money from your $3,500. हाँ जो like पूरा PCs था, like salaries, like all from my but you all like अभी भी तो होंगे ना PCs. PC वो like sell out कर दिए वो like क्योंकि ऐसा ही एक अपार्टमेंट लिया था, अपार्टमेंट नहीं था, एक घर था। मैंने देखा था वहाँ पे मीटिंग ले रहे थे, उधर LGBTQ लाइट्स थी। सेम तो वहाँ पे ऐसे ही like वो बना के PCs थे, वहाँ पे लड़के आते थे, आई हाइड फ्रॉम like LinkedIn। हाँ तो हाँ so वो सारा Experience that hiring, because I've never hired from LinkedIn and generally stayed away from, unlike most agencies, generally stayed away from hiring people in India in general. ठीक है। सो मैंने कुछ लाइक 2-3 लिंक्डइन से हायर किए थे, बट मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम दिल्ली में ना क्या होता है, बंदे लाइक कोर्सेज करते हैं एडिटिंग का एनिमेशंस का। सो मेरे दोस्त ने भी किया था एंड उसमें से लाइक बहुत लोगों को कोर्सेज का सर्टिफिकेट तो मिल जाता है बट काम नहीं मिलता। तो मैंने उस दोस्त को बोला कि जिन्होंने भी लाइक एडिटिंग का किया है, आई ट्रेन देम एज वेल। सो नॉर्मल एक प्रीमियर प्रो का आना चाहिए, कैसे बेसिक्स चलता है, राइट, एंड कैप्शन लगाना लाइक वो सब कैसा आता है। सो उन सबको ले आया मैं, बेसिकली उन सबको काम दिया एंड सैलरी वो सब Hiring is good then. Yeah. LinkedIn पे hiring is crazy. Like you can put up a post for $6 and you'd get like thousands of applicants. Yeah. Literally thousands. But this never happened to be around certain. I guess because I'm really searching for that. One or two, भाई. You'd have to put a VA to like do the searching कि मतलब कौन सा बंदा अच्छा है, क्योंकि सारे चूते ही रहते हैं LinkedIn पे. तब मैंने किया था, तब लिंक्डइन कोई पैसा नहीं लेता था। हाँ? फ्री पोस्टिंग। And one more thing here is that how did you manage with team members in real life? Because I've seen two things. Like when a small company is making a team, and if they get the bad hires for a small company, it becomes very bad. Like at least when I was starting earlier, in my early days, when it was called Topi Group, at that time when I had in-person employees, my life was bad. Because they were taking away from my productivity. I had to go and babysit them almost. Like every night we used to have check-in meetings, and if you're doing that, please stop. Check-in meetings to how is it going and all of that. I don't think I want to do that. That was same with me as well. Daily like take away from productivity and talk about that. तब मेरी इतनी प्रोडक्टिविटी थी भी नहीं, आई वॉज टोटली फोकस इन टू लाइक प्रोवाइडिंग दिस क्लाइंट, है ना, क्योंकि तब मैं एक ही क्लाइंट था, वो लाइक एक लड़की थी। सो दैट वाज गोइंग गुड, तो उसमें मेरा इतना था नहीं, $1,000 पर मंथ इतना कुछ था। सो एंड आई वाज टोटली इनटू दिस। सो डेली लाइक 9 बजे जाता था, लाइक एडिटर्स 10 बजे आते थे, उससे पहले थोड़ा सेटअप वेटअप। सो 10 बजे आते थे एंड पूरा लाइक उनको सिखाओ। सो पूरा टाइम लाइक और कहीं जाता ही नहीं था। सो पूरा फोकस उसमें ही। सो प्रोडक्टिविटी अपने ऊपर लाइक कुछ भी नहीं था। Since then, what I found very beneficial is pay more, like a lot more, like more than what I get the best editors, have it remote, they're going to work. So first of all, you're paying premium, and you're getting good talent, and you don't have to babysit them, and no. Yeah. That's how I'm doing. It's like the balance you have to maintain. If you do have money, you give them money. If you don't have money, you'll have to spend time training them. Yeah. Exactly, you're transitioning. That transition is totally accurate. Has that happened for you? Are you still liking in person? No, we just shut it down after like he scammed us basically. So now all like remote. Yeah. I know. But then one thing that I've seen is that great companies who have a product, a vision, something like that, they're better run in-house. And you need the key hires, you need the great talent for those companies. That's right. Like recently the company, like a lot bigger. yeah, the company we were in talks with as well, like the US one, like they wanted me to come in house, and like the way they explained how things work there is ki bhai sorry, so like they explained ki matlab you'll be in same rooms and then you'll be sitting together, and it maybe in theory it takes off from productivity because ghar pe you're alone, but there'll be ideas bouncing off of each other's. And when there's that happening, when you actually have people that are committed to the company and they only want to grow the business and there are ideas bouncing off of each other, like it's really hard not to grow. Right. But then when you're small, it takes away from productivity if you don't get the right members. Yeah. And to get the smart people to go all in with you, you either need money or leverage in forms of, okay, you get some equity, then sure, you can make it work. But you need that gradual change as you keep growing into, more of an in-house team later on, at least, like in-house and physical. Right. Yeah. Later. But that's what I've seen as the stages of
growth. I agree. Fair. So you were the first fuck-up. And around the first fuck-up, right? Did you have any contacts back then, or ऐसे ही चल रहा था? What type of contacts, man? Contact like in the service as agreement for the client. Then they sign, and you have to pay. And No, I was like totally noob in this fragment. like कुछ भी Even if you did have the contract, कुछ होता नहीं है, but let's not tell them, you know, that contract is always good. like on a serious note, like if you have a contract, like they're not bound by any legalities. You're not going to sue them So for they're like literally bound by legalities, but you're not going to sue them. But Yeah. unless it's like a 100K contract, right? And you might. Even then it's a might. Yeah. कि मतलब you're only liable to get back what they promised you, और sue करने में जितने पैसे लगेंगे और जितने टाइम लगेगा वो ज़्यादा होता है वही. हाँ, लेट्स सेकंड फकअप भाई. ये फकअप मतलब 2 लाख रुपए आपने गवाए, बहुत बुरा लगा सुन के. लेकिन सेकंड फकअप, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो मेरा सेकंड फकअप फर्स्ट वाले से बहुत अलग था. दैट रिलेट्स टू माई लाइक पर्सनल लाइफ. सो व्हेन आई वाज डूइंग अराउंड लाइक 5K, सो माई लाइफ वाज गोइंग गुड. ठीक है ना, कोई इतना लाइक क्लाइंट से लाइक बैक एंड फोर्थ. माई लाइफ वाज गोइंग गुड एंड देन आई डिसाइडेड लेट्स डेट सम गर्ल. Decided. हाँ You decided. हाँ. But if she didn't come, you were talking to someone. Before that, you decided, I need to fuck. No, Okay. not work, but like serious relationship, like some. Okay. है ना? तो My bad. भैया से आपस में बात कर रहे हैं. कुछ नहीं बोलो. ठीक है. सो इन लाइक नॉर्मल रिलेशनशिप, राइट? सो एंड आई टॉक टू अ गर्ल. ठीक है. एंड रिलेशनशिप में आया एंड इन माई माइंड मेरा जो ट्रेजेक्टरी था कि आई विल बैलेंस माई वर्क. क्या? Sorry. The way you said, मैं relationship में आया. टॉक टू अ गर्ल, मैं रिलेशनशिप में आया. भाई वो थोड़ा मैं decide कर लिया. मन था बात करके पे आए क्योंकि अरे मतलब इसको यहाँ जो फर्स्ट ईयर के कॉलेज में फर्स्ट ईयर के कॉलेज बात किया, मिले, बहुत अच्छी लगी. एक दो date पे. अरे लेकिन वो वाली तो बिजनेस में है ना Businessman. मेरा मन कर रहा है पिज्जा. I want a girl today. अच्छा तो थोड़ा डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप बताया आपने कि भाई मन किया डेट करने का, टॉक टू अ गर्ल, रिलेशनशिप में आया. ठीक है. सो Rewind. Don't cut, rewind. रिवाइंड. सो कॉलेज में फर्स्ट ईयर का कॉलेज था. सो एज आई सेड आई ड्रॉप्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर. बट ये था कहानी मिड ऑफ फर्स्ट ईयर कॉलेज. सो कॉलेज जाता था. सो ये पूरा लाइक मेरे माइंड में था कि लेट्स डेट सम गर्ल, है ना. सो वहाँ पे मैंने लाइक कॉलेज में गया, लाइक जो थोड़ी पसंद आई. आई लाइक स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन, है ना. स्लोली यार सच में भाई तू तो अब मैं कैसे बोलूँ. दैट्स द वे आई टॉक ना. और थोड़ा हिंदी में मेरा मात्राओं का थोड़ा इधर उधर होता है. चलेगा. सो आई स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन स्लोली, है ना. एंड देन हम डेट पे गए. देन थोड़ा वो हुआ हमारा नॉर्मल. अब हम थोड़े बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप में आए कि हाँ थोड़ा लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. और मेरे दिमाग में जो था प्लान कि आई विल बैलेंस माई वर्क लाइफ, माई एजेंसी, है ना, कि डिलीवरिंग गुड सर्विस एंड मैनेजिंग अ गर्ल एज वेल. ठीक है. Managing business को managing my इधर देख के जोक मारता है भाई. तो मैं कहाँ था. भाई मैनेजिंग अ गर्ल एज वेल. managing girl both my back. So finance. वर्क लाइफ. You were managing a girl as well. So whether that you thought that you would manage, you know, नो ये दूसरा कुछ सेंटेंस यूज करूंगा मैं. delivering good service. नहीं managing girl. आगे बोल. मैनेजिंग गर्ल. और तुम लोगों ने कुछ भाई कैंसिल हो जाऊंगा मैं. मैनेज कैसे गर्ल भाई. Cancel नहीं This is होगा. the funny. हमारा podcast बहुत ही हो रहा है. This is the funny. ठीक है. ये नहीं होता है. बहुत मतलब No. सीरियस था, एक बार भी ऐसा हमने नहीं किया कभी. अच्छा है bro. This is the guys. We should start with this. Yeah. ठीक है. सो मेरे माइंड में ये था पूरी चीज़. बट पूरा ये जो फकअप था कि आई फोकस्ड ऑन द गर्ल, है ना. एंड जो मेरा पूरा माइंडसेट जो था प्रोडक्टिविटी लाइक हसल, है ना, मॉन्क मोड जो भी था पूरा वो मेरा हट गया. सो देन क्योंकि मेरा प्रायोरिटी ऑब्वियसली था कि पैसा, राइट. सो ये लाइक फन के लिए थोड़ा वैसा था, माइंड डाइवर्ट करने के लिए. बट देन आई रियलाइज कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा.
आई हैव टू गेट एस्टेब्लिश्ड बिजनेस, क्योंकि तभी मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट $10,000 मुझे हिट करना है, सो आई कैन ड्रॉप आउट लाइक कॉलेज. सो इट्स स्टिल, सो मुझे दिखा कि आई एम लाइक, मैं भटक रहा हूँ अपने लाइक गोल से, है ना, थोड़ा लाइक उसकी तरफ जा रहा हूँ. सो आई नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक to achieve my goals first, then I can like, I have like my whole life, right, to get behind the girls, right? So भाई अब भी रेट कर रही है. भाई वापस आ जा, मेरे को बोलना है भाई, रहना चमन. बाप रे बाप. I thought of a logical question. So how do you manage to balance? So for the advice for anyone listening, we recommend them not getting girls. You know कुछ बोलने वाला था. और Aman गया. Let's continue. यही था. So guys, viewer context. Aman laughed too much. He's gone. He'll be back in a minute. But with what you're saying is that you were unable to balance it because obviously there's temptation. How do you? What temptation? Like the woman. Yeah. Okay. Getting behind a girl, bro. Okay. ठीक है. So, how would you, to any younger guy watching this who wants to get to certain goals, what would you recommend? Would you tell them, okay, just abstain, don't do anything, or like continue? So, is it that you were unable to find the balance and others can get the balance, or what do you think? I think it's like similar with like most of the guys. So first क्या होता है कि तब मैं obviously like normal I was making like good amount of money, right? Then मैंने decide किया थोड़ा कि जाना चाहिए girls की तरफ, but then I pivoted back. यार ये कट करना. Please. यार मेरे दिमाग में वो वाला कोट आया, पता है? पर्वत. भाई नू कह रही यू आर अ पर्वट. भाई मुझे लगा भाई पर्वत कह रही है. भाई बोल भाई. भाई प्लीज इसको मत करना, प्लीज. अच्छा प्लीज सीरियसली ये वाला बहुत मजा आया. ये वाला लास्ट वाला मत करना. ठीक है, ये काम करते हैं. I'm going to the podcast. If you still think later on, ठीक है. टाइम से बता देना. नहीं पूरा देखना. ठीक है. सो मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ. सो मोस्टली गाइस का अभी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी है, सो दे आर लाइक, भाई ये बोल भी रहा मेरे फ्रेंड्स भी है, ऑब्वियसली है ना भाई तेरे फ्रेंड्स. अरे जो मेरे फ्रेंड्स है, अच्छा वैसे जो मेरे कुछ फ्रेंड्स है, दे आर मोर लाइक फोकस ऑन लाइक गेटिंग गर्ल्स rather than building their. Sorry, I need a break. बैग ज्यादा है लड़के को मैनेज कर रहा है. ओ यार Mic test. मैनेज कर रहा है, बिहाइंड द बैक जा रहा है. Okay. सीरियस वाले में इतनी बकचोदी हो रही है, तो अगर वैसे अभी 4 बैठेंगे तो मजा आएगा. भाई आप देखो. Okay. चौथा टेक, कितना टेक है चल रहा है ये? So balance around women. So you have friends who wanted to call back. हाँ, सो मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं ना, सो दे आर मोस्टली फोकस ऑन कि पहले लाइक गर्ल्स rather than building their career, right? सो ये थोड़ा एक मिस्टेक है कि लोग ना करें rather than building like first like a good income source, कि हाँ उसके बाद you can just take care of girls. I think क्या मैनेज कर रहा है कि तो ये भी काट देना. और रुको, इसका मैं वापस वो करता हूँ, नहीं ये जाएगा वापस बोल. वापस बोलूँगा. इसको मैं वापस बोलूँगा. सही. I think definitely हम लोग भी मतलब a lot of guys have कुछ ज्यादा गलत नहीं बोला. तुमने गलत नहीं बोला. मेरे पास ही आ गई. भाई अब खेलते हैं, मतलब सॉरी जो भी करते हैं ये खत्म करते हैं. Okay. सो ये था. हाँ. So, but then in general, so don't. Your best advice here was that you should always focus on the careers. Does that mean that any young guy, let's say they are a 17-year-old, and they have one client, they may be earning $500 a month.
but they want to get ahead. So at 17, okay, would you say that, because I think a lot of our viewers are slightly younger, 17, 18, would you recommend or would you suggest them, right now, okay, you're in school, you're in first grade or you're in first year, second year, third year, you should abstain altogether, or would you still think that there's a balance in which one can find a woman No. who supports them? Barely. Yeah. Barely. I think it's like a 9 out of 10 chance that you're better off without one, unless you have your finances in check. मतलब तुम डेट पे जा रहे हो और अपने पापा से पैसे मांग रहे हो कि पापा डेट पे जा रहा हूँ, मतलब किस शर्म नहीं आती है क्या? हाँ, और स्टिल इफ यू आर मेकिंग फॉर एग्जांपल $1,000, सो उसमें से योर जॉब इज टू लाइक गिव मोस्ट ऑफ द अमाउंट टू योर पेरेंट्स. हाँ. कि हाँ, In my experience, like it doesn't cost much altogether. I don't know what you guys have like experienced this way. Much is subjective. So I haven't been much to like have someone, like it's you don't always have to go on like an expensive sushi day. It's like 1 out of 10 women you'll find that are actually good, supportive, and they won't bug you a lot. it's like you have to give them like good gifts. Very nice. They like on their birthday, Really? on the anniversaries. Yeah. I haven't had experiences like that. Like, I've never had a girl ask me for yeah, demand or like. I also haven't faced, but I've seen my friends Yeah. basically giving. They don't have no money, right? They have rich parents, and they are giving like for example 10,000 like rupees gift, like chain to their like girlfriends. सुबह की बात करने लगा भाई. In the past. ये 14 साल का हाँ. इसने एयरपोर्ट पे घूम रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ. एयरपोर्ट. हाँ, और ऐसे इधर उधर देख रहा था तो इसको मन किया कि अपनी गर्लफ्रेंड को एक रिंग देते हैं. तो ये दुकान में गया, इसने 40,000 की रिंग खरीदी और उसने दे दिया. 30,000 की रिंग खरीदी, ऐसे बोले जैसे कम है, और दे दिया और फिर चले गए. 14 years old. 14 साल का था ये. पुराना है, मेरे को ऐसे मत देखा पुराना. 14 years old में ठीक है. ठीक है, मैं चुप रहा था. मैं तो चुप रहा था. पोकेमॉन देख रहे थे भाई टीवी पे. ओके. क्या बोलूं? हाँ, सो ये लाइक मिस्टेक. मेरे जैसे मत बनना. हाँ. If you're wrapping up, thanks for sticking all the way through. If you made it until the end, really just for the kiss from Rex, if you want that, Co-host. comment. What should they comment? Comment elephant this time. Last time it was koala. Yeah. Comment elephant, bro, and I will. कमेंट टेक केयर ऑफ गर्ल्स, एलिफेंट नहीं. No. हाँ, ऐसा तो इंटरेस्टिंग करते ना. इंटरेस्टिंग डालो. कमेंट टेक केयर ऑफ गर्ल्स. Comment take care of girls. And मैनेज गर्ल. but last time it was genuinely crazy. Episode 3 to see the number of people that commented koala. Like I was like, bro, so many people are listening to us until the end. Like they've gone through all of this. So in DMs they're coming like koala. Yeah, that's fucking crazy, bro. Take Like, care of I genuinely appreciate everyone. Yeah. Like actually. Yeah, I talk to them as well, and they're like nice people. So Not all of thank them. you for speaking. Like, I try to get all DMs. Conclude, Aditya. Yeah. Give us 3 points. Well, this is not the podcast. No. ऐसे नहीं 3 points दे दे. मतलब number 1 I'll start with the first point. When you're young, Aditya says, do not focus on girls at all. Yeah. Build your agency, get your finances in check. And second, qualify your clients before delivery in service. Or make sure they're in contact and you get हाँ. money upfront. On your front, like try to get, and the third क्या बोल सकता हूँ? Take care of girls. So the third point is make good amount of money consistently before dropping out and prove your parents wrong. Damn, son. Cut.